डेंटिस्ट होके ऐसी स्माइल, पर जो करना है वो करना है ना। इन्फेक्शन थी, निकालना पड़ा, क्या करें। Hi friends, welcome back to my YouTube channel. If you're new to my channel, Namaste, Sat Shri Akal, I'm Navneet. In today's video, I'm sharing with you how I hide these marks, like acne marks या कोई भी blemish है आपके face पे, उसको कैसे hide कर सकते हैं without any color corrector. And spare my puffy face. I just got an extraction done yesterday, इसलिए थोड़ा बहुत swelling है यहाँ पे. So spare me for that and excuse me for that, and let's move ahead with today's video and hide these imperfections perfectly without the use of any foundation and color corrector. Let's begin. So first up, let's talk about the reason for these hyperpigmentation on your face. There can be acne marks, dark spots, blemishes. क्यों होते हैं? That can be because of exposure to sun, it can be because of hormonal imbalance, or it can be because of genetics as well. Hyperpigmentation बहुत बार genetics में if आपके मामा को है, पापा को है, कई फैमिली में है, फिर भी हो सकती है. जो जेनेटिक हाइपरपिगमेंटेशन है उसका क्योर यूजुअली डर्मैट्स से ही मिलता है. बट अगर आपके माइनर हाइपरपिगमेंटेशन है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सन एक्सपोजर या टैनिंग है बहुत ज़्यादा, या फिर आपको एक्ने थे और उसके मार्क्स रह गए हैं आफ्टर एक्ने हैज़ फेडेड, सो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको 3 इंग्रेडिएंट्स बेसिकली बहुत हेल्प करते हैं, विच इज़ कोजिक एसिड, अल्फा आर्बिटिन एंड विटामिन सी. Now the one product I have been using to heal my acne and fade these dark spots, like 1-2 एक्ने हैं, बाकी सारे डार्क स्पॉट्स ही हैं, तो उसके लिए मैं जो यूज़ कर रही हूँ करेंटली वो है डर्माको का 2% कोजिक एसिड. इसमें अल्फा आर्बिटिन भी है एंड इसमें नायासिनामाइड भी है. सो ये सब मिलकर आपके जो एक्ने मार्क्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, हाइपरपिगमेंटेशन है ऑन योर फेस, इस सबको ट्रीट कर सकता है. सो आई एब्सोल्युटली हैव बीन यूजिंग दिस डे एंड नाइट. मैं भी कुछ यूज़ नहीं कर रही अपने फेस पे बिकॉज 3 इंग्रेडिएंट्स हैं ऑलरेडी. इसी में एक्टिव्स हैं जो नायासिनामाइड मैं आपको पता है यूज़ करती थी, तो इसमें ऑलरेडी है, सो मुझे अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. एंड नायासिनामाइड इज़ बेसिकली इफ़ यू हैव ओपन पोर्स, लाइक मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो नायासिनामाइड हेल्प्स मी टैकलिंग द इशू ऑफ ओपन पोर्स, या फिर अगर इनलार्ज पोर्स हैं उसके लिए बहुत हेल्प करता है. एंड अल्फा आर्बिटिन एंड कोजिक एसिड, बोथ ऑफ देम आर एक्सेलेंट एक्टिव्स टू ट्रीट एनी melasma, pigmentation, dark spots on your face. So I have been using it day and night. मतलब अभी जैसे I have to get ready, so I'm just going to use about 2 drops of this. So this is going to help me create a layer also, and plus day night लगाने से इफेक्ट जो है आपको जल्द ही दिखेगा, और विद इन 2 weeks you can actually see the difference. I don't know if you've been following me in previous videos, उसमें भी जो मेरे मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, अभी तो काफ़ी फेड हो गए हैं. आफ्टर सीरम यू कैन जस्ट गो अहेड विद योर नॉर्मल मॉइस्चराइजर एंड नेवर फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन इफ़ यू आर गोइंग और यूजिंग दिस सीरम during the daytime, going out in the sun. Even if you're not going out in the sun, using a sunscreen during the daytime post use of any skin active otherwise is very important. I'm using my Dermaco 1% hyaluronic acid sunscreen. Always follow the 3-finger rule while applying the sunscreen. Like मैंने आपको बताया मेरी combination skin है, तो मेरे लिए तो ये sunscreen बहुत अच्छी है. Even if you have dry skin, oily skin, normal skin, ये सनस्क्रीन आप सबको बहुत अच्छे से सूट करेगी. मुझे तो बहुत पसंद है ये सनस्क्रीन. Another very big reason for having hyperpigmentation or pigmentation on your face is because of not using sunscreen regularly. Do make sure कि अभी जो apply sunscreen आपने कर ही ली है, after every 2 hours if you are staying out in the sun, make sure you reapply your sunscreen. Otherwise फिर मत बोलना कि पिगमेंटेशन क्यों होती है अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो सनस्क्रीन. और मेरे रिलेटिव्स में पता है कितने ज़्यादा लोग हैं जो जब भी मैं मिलती हूँ वो कहते हैं हम तो सनस्क्रीन लगाते ही नहीं है, कोकोनट ऑयल लगा लेते हैं. कोकोनट ऑयल से या किसी भी ऑयल से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू मस्ट यूज़ अ सनस्क्रीन एवरी सिंगल डे. अंदर हो SPF 30 इज़ इनफ. लाइक इसमें जो डर्माको की 1% हाइलुरोनिक एसिड है, इसमें SPF 50 है. इट हैज़ PA++++ प्रोटेक्शन. सो 4+ प्रोटेक्शन है इसमें. UVA UVB लाइट दोनों से प्रिवेंट करती है आपकी स्किन को, एंड ब्लू रे से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. सो इट्स ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन विच इज़ वॉट यू नीड व्हेन यू स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस. घर पे हो तो SPF 30 वुड बी सफिशिएंट, बट ऑलवेज अप्लाई इट.
एंड आजकल तो कोजिक एसिड और अल्फा आर्बिटीन even face wash form में भी available है. Though the concentration is a little less, you would have to apply a kojic acid serum to find proper results for yourself. But kojic acid face wash, this one by Dermaco, again is very beneficial because you're using it every single day. तो आपको जो effect है इसका persistent लगेगा. So this is the 1% kojic acid daily face wash. Again, it has 1% kojic acid, 1% niacinamide and it has alpha arbutin as well. तीनों के benefits मैंने आपको already बता दिए हैं. So ये सब आपको एक face wash के form में भी मिलेगा. और इसका सबसे अच्छा जो मेरे को लगा इसका, it's like a cream form. It's not like a proper gel, but इसकी consistency इतनी अच्छी है. It will be suitable for every skin tone, no matter what. Like होता है ना जेल फॉर्म जो है वो acne prone ऑयली स्किन के लिए काम है, जो वाटर बेस्ड है वो ड्राई स्किन वाले यूज़ करो. सो इसकी क्रीम कंसिस्टेंसी है विच फॉल्स बिटवीन द टू. सो बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी और फॉर्मूला है फॉर एनी स्किन टाइप एंड इट लैदर्स प्रीटी गुड एज वेल. सो ये तो हो गई हाउ टू प्रिवेंट योर हाइपरपिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स. अब बात करते हैं अगर है उसको कवर कैसे करते हैं. एंड excuse my voice as well, I'm not well, I'm a little bit under the weather. Now what I prefer to use if I'm not using a color corrector is 2 shades of concealer which are different. Like एक तो आपको अपनी skin tone का concealer चाहिए, एक concealer use करो जो आपकी skin tone से 1 या 2 shades darker हो. So जो darker shade है that is going to help you hide that marks, and जो आपका अपना skin tone के same similar concealer hai, that is going to help you in evening out your skin tone properly. So the ones I've been using are by Sugar Cosmetics. The shades I have are 30 and 45. So I'm going to use the darker shade which is 45 first, and then over that I'm going to use the lighter shade. Now if you do not want to invest in 2 concealers, like आपको कुछ cheaper alternative या economical range का product चाहिए, then you can definitely go ahead and try the go ahead and use the Inside Cosmetics this palette. This is the Conceal, Correct and Contour palette, and this is in the shade Light. Absolutely beautiful palette, very economical. मेरे ख्याल से 200-300 रुपए का है, and बहुत ही अच्छा consistency, high end product के comparable ये product है. I love how it blends. I love the shades. You get 6 shades. You can even contour because it has a extremely dark shade as well. So 3 I guess 2 या 3 variants में ये available है. मेरे पास light है, so you can choose. And अगर आपको 2 concealers के साथ नहीं काम करना तो this palette again is a beautiful pick. So I'm going to zoom you guys in so that you can have a nice look, clear look without any filters कि क्या चल रहा है, how am I doing it. You can see काफ़ी ज़्यादा spots हुए हैं मेरे face पे for now. So I'm going to go ahead with the shade that I've told you is darker, which is 45. I'm just going to dab it on the points where I like to conceal. So after this is done, I'm going to let them sit for around 30 to 40 seconds, and then I'm going to go ahead with my shade of concealer. I'm going to lightly dab on it. I'm not using a brush or a beauty blender. You can of course go ahead and use a beauty blender because you don't want the product to move so much. You just want to tap tap tap. एंड बाय द वे ये ट्रिक बहुत अच्छी डार्क सर्कल्स पे भी बहुत अच्छे से वर्क करती है. मैंने एक बार वीडियो करी थी, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट. आई हैव यूज्ड दीज 2 कंसीलर्स फॉर डार्क सर्कल्स एज वेल एंड इट एक्चुअली वर्क ब्यूटीफुली. एंड आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड डू द सेम हेयर एज वेल. So after we have blended the darker concealer, I'm going to go ahead with the lighter concealer on top of the darker concealer. Mostly तो आपको अभी दिख रहा होगा कि almost hidden तो हो ही चुके हैं. So I'm just going to use very little bit of it just because I want my skin to look more even and one with the rest of my face.
Next, I'm just going to take a stippling brush and I'm just going to blend it. I'm not going to drag it, I'm just going to dab it. So let's do this. And this is how my skin looks. As you can see, बहुत ही even look दे रहा है मेरी skin को. मैंने कुछ color correction कुछ नहीं किया and foundation भी use नहीं किया, just concealer and that is it. And मेरी skin already is looking so even. You can just leave it as such. Just make sure that you powder it or use a compact to set the concealer in place before you go out. And the result is आपके सामने. आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ पे इतने सारे marks थे? नहीं ना? मुझे लगा ही था नहीं लगेगा. लुक को कंप्लीट करने के लिए I'm just going to use a little bit of my blusher. And that is it. कुछ यूज़ नहीं किया मैंने, सिर्फ कंसीलर, ब्लशर, मस्कारा पहले से ही था. So this is the final look. Easy way to hide any dark spots and even dark circles by just using a concealer. No color corrector required whatsoever, and the look is gorgeous. Very natural, very minimal. कुछ heavy नहीं है, केकी नहीं है. अगर मैं आपको zoom in भी करूँ अपनी skin के ऊपर, आप देखो कहीं पे भी आपको patchiness या फिर creasiness, greasiness नहीं दिखेगी. And by the way, all the product links are mentioned in the description along with the shade names that I've used. If you are interested, just check the description box. Dermaco products के ऊपर अगर आपको pigmentation जड़ से ख़त्म करना है, if you want that, so I have a coupon code for you wherein you can use my coupon code NAFNEET2023 to get additional 20% off all Dermaco products from their website. So all the Dermaco products are completely fragrance free, so they are perfect for anybody who has sensitive skin as well. Dermaco has also empowered 10,000 plus students this year as a part of their Young Scientist initiative. And every time you buy from Dermaco, they are going to link your order to a child they are going to educate along with Bhumi, as they have educated 10,000 plus students this year. So you're going to help a lot of students get access to education, which is a noble deed as well. So that being said, I'll take your leave. A very easy, simple 1-minute routine to cover up any dark spots and dark circles as well without the use of any foundation or color corrector. Even if you have bad dark circles, using a darker concealer is going to help you a lot. So try this hack and try this and let me know if you found it helpful. If the video was of any use to you, do not forget to like the video and share the video. Subscribe to my channel if you have not done that already, and I'll see you next video super soon. Bye guys. मेरे को लगता है कि मेरी स्माइल को नज़र ही लग गई है किसी की.